This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan 1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan 2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan 3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan 3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan 3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the 4th instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other, the propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth. Hey everybody! Welcome back to your very own BYJU'S 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Aakash BYJU'S NEET and Aakash BYJU'S JEE channels. So many channels. I think occasion ही ऐसा है, we had to come live on all these channels simultaneously, and sorry we are slightly late, I understand. But this is extremely important because today we are, sir, making history, है ना? Yes, exactly. So you are going to witness history in the making. और आज हर एक इंडियन के लिए एक बहुत ही प्राउड का दिन है because we all remember that day. Yes. You know, Chandrayaan 2. And I would never say Chandrayaan 2 was a failure because most of the media houses reported it that way. But I think it was a huge success and I'm sure that is what paved way for Chandrayaan 3. एंड अब हमने जो भी बातें जो भी स्टेटमेंट सुने हैं इसरो के जो चेयरमैन हैं उनसे भी जब हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे उन्होंने बोला कि वी आर मच मोर प्रिपेयर्ड, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड और जितनी भी चीज़ें हो सकती थी गलत उन सबको हमने काउंटर किया है एंड वेरी सून I think probably we are going to be the first country
in the world to, soft land on the moon. So fingers crossed, it's a great day. On the polar region, the southern part of the moon. Yes. And this region, as you saw in the video, this region is of particular importance because हम ढूंढ रहे हैं पानी moon पे. Correct. And there is this southern part where we have these craters which are in shadow. तो वहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं crystallized water, and that's why it's very important that this mission is successful. Yes, hands folded. Let's see. But also ये जो southern region है, it's of immense importance because हमको पता है कि we always see the same face of the moon. तो धरती ये है और चांद ये है, तो आप हमेशा जब भी आप घूमते हो तो आप हमेशा चांद के एक ही तरफ को देखते हो, राइट? सो ऐसी रीजन है जो डार्क पार्ट ऑफ द मून है, जहां पे कभी लाइट आई ही नहीं. इसका मतलब है कि इट इज प्रिजर्व्ड एवरीथिंग and it can give us some very important hints and ideas about the origin of universe itself. That is why पूरी दुनिया आज हमारे ऊपर नजर टिकाए रखी है, because this is going to be an immense field of study and we don't know, it might open up a lot of other factors as well, जिससे हमें पता चले कि actually universe बना कैसे था, composition क्या थे. There are so many questions that has remained unanswered till now. So I think, yes, and I hope that we definitely find answers to them. So the journey started. Yes. This is, we all remember, 1969, Neil Armstrong. What happened? About to launch. All right. Oh, nice. The countdown started, everybody. Come on, let's do it right now. Here. Nice. 50 seconds. So we are cutting down to live. Are you audible? All right, so it's a launch. Wow. Whoa. यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है. LVM-3 के उत्थापन के साथ 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. That's so beautiful. There we go. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है. Yes, once you are out of the atmosphere. वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं. Everybody, this is the moment, what we all can motors feel proud, thrusting simultaneously what we have achieved. And ISRO is known to do missions which are very cost effective, which are successful. Yeah, to just give you a reference, this mission is even cheaper than Adipurush budget, right? So that's crazy. I mean, last time से भी कम budget में we are able to do this, right? So I can see people clapping, and this is something that we all can be so super Performance normal. The core stage has also commenced its operation.
This Alright, so stage here based on it is. Yes. You can see the boosters separation. I'll also explain all these of stages hypergolic in a moment. Earth storable Alright, so rockets yes, we have the second 2H25 stage starting and now. N2O4. Alright, and Now very the soon you're also S200s going have to been see the separated. cryogenic engine, which would be coming up on the screen. So घटनाक्रम के now अनुसार the main यह यान rocket, इस the यान main से rocket, which is also called as the S200 Bahubali. boosters को So 6 सफलतापूर्वक times it has पृथक कर been दिया गया launched, है and it has a यह काम 100% success rate. separation motors की मदद से किया जाता है It's the next big thing in space उसके science, बाद they say, and L110 probably it तरल will give नोदक us a पर capability. आधारित So you can see और different विकास इंजन के stages on your साथ screen यह right now. चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ And the अपनी timing उद्दिष्ट and कक्षा of की ओर course बढ़ रहा the है speed of the rocket at this point of time would probably be around 7,000. Almost अब यान 7,000 kilometer per closed hour loop is what guidance के the अंतर्गत speed है of the rocket is going to be. And once the cryogenic engines are going to be fired, which will be couple of seconds from now, approximately 2 minutes, जब rocket fire हो चुका है, उसके 2 launch मिनट के vehicle is almost closely बाद following cryogenic direction. engines fire होंगे और तब speed almost 36 to 37,000 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाने वाली है. pairing को And पृथक कर दिया our गया है rocket यान is से approximately going to be. So you यान can see अब now. Okay, so yes, here it is की ऊंचाई प्राप्त the कर चुका module है itself. This is Chandrayaan 3, and you can चरण see का the कुल heat प्रज्वलन shields काल are 200 gone सेकंड because होता now है it is not और इस required दौरान at यह all. करीब 1600 So अब थोड़ी किलोन्यूटन देर में का आपको प्रणोदक दिखेगा उत्पन्न कि करता main है rocket separation होगा, We are and then you will 220 have a seconds visual past. of the cryogenic engine. So this is crazy. It's going as per the trajectory, 100% on course. You can see everything over here. Altitude almost 137 kilometers, approximately around 175 kilometer के time पे आपको दिखेगा. The speed of the rocket is almost 37,000 kilometer per hour, and that is crazy, isn't it? Just keep track of this, because these graphs, we all remember that graph which happened in Chandrayaan 2, and that was a very sad moment we all felt, right? So, and yes, on screen this is, as sir said, this is the passenger who is going actually. Yes. So we are expecting this to reach moon around 40 days from now, and then we have a rover which is supposed to travel on the surface of moon and gather lots of data and lots of information which we are waiting for. Correct. So this is very different from the previous Chandrayaan 2 because this has now got one propulsion unit is there, and then there is a lander, and inside this lander there is a rover. So the name of this lander is Vikram. So we have not changed the name, and even the rover is same, Pragyan. Yes. Because we did not put orbiter in this particular Chandrayaan 3. The reason is we already have an orbiter in place, which is just Correct. working fine. So that's really great. And yes, you can see the amount of time it has elapsed, and you can see now the main rocket separation, and this is the cryogenic engine I was talking about. India is so proud of this cryogenic technology which was developed under Dr. Abdul Kalam sir, and I'm very proud to say that I had worked on a project on fabrication, and I just goosebumps now because I can just feel it. So yes, here it is, the cryogenic engine, and now the speed of the rocket is approximately 37,000 kilometers per hour. We are almost going into the geosynchronous orbit, and we'll soon be in the geosynchronous orbit, from where this module, the lunar module, will take over, and from there it's just about orbiting, Getting the slingshots. Earth, yes, and then finally starting with the trajectory after so many rounds, just starting with the trajectory of the transition from the journey that it has to cover in 40. So I think till now what we have observed, the rover is away from the the Earth's atmosphere. Means it has a long journey now. So let's learn about what exactly went up, right? What was those two modules which went away? बोलते हैं solid fuel होता है, उसमें फिर liquid fuel होता है, right? So all of these things, let's learn them very quickly, because you know what? Yes, we are seeing it, but do we know about it? So let's learn about it very quickly, because sir, learning तो जरूरी है. Yes, बहुत ज़्यादा important है. So as we can see, the scientists now, they can chillax a bit. लेकिन धड़कन अभी भी तेज है. बिल्कुल. But I think very soon we are going to get into the geosynchronous orbit, and things are just going to be super fine. So I think this was the most important stage of the rocket. जो हम जब भी किसी चीज को launch करते हैं, तो I think the first, second or third stage होता है rocket का. And there is also I must tell you that there are thrusters in the lunar module itself. So basically एक rocket में 4
चार जो हम सोचते हैं कि एक ही रॉकेट है और एक ही जगह प्रोपल्शन होता होगा, ऐसा नहीं है. आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रॉकेट. और पहले बूस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद मेन रॉकेट होता है, जो इस केस में LMV-3 जो हम बाहुबली रॉकेट के बारे में बात कर रहे थे. उसके बाद आपने देखा क्रायोजेनिक इंजन, वो ऑलमोस्ट 900 सेकेंड्स तक अभी चलेगा. ऑलमोस्ट आपको 1000 सेकेंड्स तक दिखेगा कि क्रायोजेनिक इंजन इज ऑलमोस्ट देयर, राइट. उसके बाद फिर वो पार्ट भी सेपरेट हो जाएगा. एंड देन you have all this solar panel opening up, and then the lunar module is going to just take over. So it's a beautiful journey, isn't it, कि एक ने काम अपना खत्म किया और दूसरा फिर वहां से आगे लेकर के जा रहा है. So different stages, and the most critical stage is this cryogenic stage which we are into right India's now. prestigious So fingers lunar crossed, landing everything is spacecraft Chandrayaan 3 when rocket takes off. This is where the first malfunction might happen. And everybody, I think on 6 to 9, 6 to 10th, most of you are asking, sir, what is your name? Everybody, this is Mrinal, sir. The moment you pass class 10th, he'll be there holding your hand, right? And I'm Saurabh, people from Aakash BYJU'S, JE and NEET. I'm Saurabh. And everybody, this is what we have witnessed. Now, let's learn very quickly how it all started, what we went through. Today, what we are seeing right now, right? Journey क्या थी? एक बार उस पे बात करते हैं. Can we have the visuals, please? This one. Among the payloads of the lander हम सब module, जानते हैं the 9 following Neil are Armstrong वाली included. कहानी. A landward And probe this is a very famous called quote. Brahma One small to step measure for man, but the one near giant leap surface for mankind. plasma density. यहाँ That से is the जब सारी density कहानी of चालू हुई थी. ions and electrons, And yes, it the famous changes Neil with Armstrong, time. the first person to The walk second on the payload moon in is 1969. Chandra's surface लेकिन thermophysical इन्होंने experiment or कुछ ऐसा CHASE किया था जो कि आज to भी हमारे measure काम आ रहा है, which thermal we'll talk about properties it. of lunar If you surface know, near if you have an polar idea, tell us in regions. the chat right now. Come on. To क्या measure किया the था? क्या हुआ था seismicity ऐसा उस around दिन? the landing site and ऐसा क्या है जो आज भी चल evaluating रहा the है? structure of the lunar crust and mantle. ठीक है. Payload You keep answering. ISL, And sir, ILSA फिर हुआ is चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, Yes, हम The सबको पता rover, है. after its Picture descent, this will video further that the you scientific see, study objectives people of in India its were own literally payloads. heartbroken that day. For I better remember understanding of chemical crying and that day. I mineralogical could not even composition had of my lunar lunch surface, because it was LIDS or laser such a induced heartbreak. breakdown खास करके अगर आप spectroscope इस is तरह के included. departments से associate Another for, payload like I is have the been in alpha aerospace particle department, so X-ray spectrometer. I know the pain. So I can just feel that कि उस दिन लैंडर हमने मॉड्यूल क्या में खोया था 3 just because पेलोड of हैं, some small रोवर में glitch. 2 But I'm और sure propulsion मॉड्यूल में we are better prepared this time भेजा गया है. to showcase it to the world कि यार सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान चंद्रयान हमारा. 3 And you know, you might feel sometimes with such a big person, किया जा रहा you see है. them crying on in front of camera. अंतर्ग्रही You मिशन feel के like लिए is भी it आवश्यक possible? But you know तकनीकों what का it happens to प्रदर्शन every करेंगे. student also. When you put heart and लैंडर soul के into your पास यह exams, और क्षमता फिर है क्या कि होता है वह अगर आपके चंद्रमा नंबर अच्छे नहीं की आते, उबड़-खाबड़ सतह खुद में को जो भी फीलिंग बड़ी होता है ना, मान के सावधानी चलो से this is like उतर सकेगा 100 और or 1000 times रोवर को bigger बाहर than लाने that. के So लिए because the country was looking और towards संचार you. सुविधाएं प्रदान करने चंद्रयान के 2 लिए के साथ सक्षम क्या हुआ था होगा. हमको पता है. Orbiter is still working, but the lander crashed. That's true. We had a लैंडर और hard रोवर crash में landing. कुल We 6 want to बाहर हैं. attempt this time is what is called a Radio soft landing, which astronomy means the of entire moonbound setup is hypersensitive intact. ionosphere जब and touchdown होता है, atmosphere, touchdown means जिसे जब short में रंभा आप जो कहा देखते जाता हो है. उस मॉड्यूल यह के चंद्रमा जो की सतह के legs पास होते हैं प्लाज्मा वो के बहुत घनत्व softly तथा touchdown समय करते के हैं. साथ And this बदलाव time का I can मापन also करेगा. tell you one more thing, a very interesting इसके बाद fact. चंद्र इस बार जो हमारा लैंडिंग का एरिया है, because we have an orbiter, चंद्रमा के because we ध्रुवीय have an सतह के orbiter there, आसपास we की were properties able to का map मापन out a करेगा. larger area. Last time it was only 750 meters का जो range था वहीं पे लैंडिंग हो सकती थी. But इस बार हमारे पास almost 4.2 kilometers in terms of length and 2.5 kilometers in terms of width. इतना बड़ा एरिया है. So the chances of success are much much higher. And जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इसरो के चेयरमैन ने ये बात साफ कही है कि हम कितनी तरीके से फेल हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस मिशन में बहुत ज्यादा बार हमने सोचा है. And still cost effective. 800 million पहले 800 करोड़ का बजट था लास्ट टाइम जब हमने बात किया था. इस बार 615 के राउंड. I think we are famous for it. I mean, mission on Mars also. That was the cheapest mission. Exactly. So it's just amazing कि Chandrayaan 3 what or capability CH3 is a follow-on the mission Indians of hold Chandrayaan 2. and why we are so C25 proud of this nation as such. Chandrayaan मुझे याद है सर एक Confederation टाइम पे is we were arrived used to be on mocked, right? सामान्य प्रदर्शन कर रहा है. across on the प्रमोशन globe. से हम क्या ही 700 करेंगे. सेकंड And की दूरी that पर आ famous चुके cartoon हैं. जहाँ पे सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति space सेकंड. scientist अंदर हैं ऊंचाई and there is a Indian guy who is 191 standing outside. I think in some movies also it has Yes. been To portrayed. I mean, autonomously handle wide range of This is dispersion quite an achievement, with yeah. white 1947, if you think about it, As it was we have struggling with told such you about
problems. Chandrayaan And 3's now what we are doing, upgrades, it's a moment to be the proud. And aspects of sir, enhanced ye robustness video, through this is from extensive ISRO by the way. ground Pick tests and video credits to simulation. ISRO and everything right now. During the last phase of Huge, the landing, the world knows module ISRO, and will have a vertical this is velocity our of less than 1 meter per second This and is a our horizontal velocity लैंडर of इसके अंदर है रोवर जो चलेगा एंड ऑल दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स सर है ना यस तो अलग अलग चीजें हम इस बार पता करने वाले हैं Yes. एक तो वी आर गोइंग टू ड्रिल एंड वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि मून अपने सरफेस पे टेम्परेचर को कैसे मॉड्यूलेट करता है हाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द मून ऑफ कोर्स वाटर पार्टिकल्स हमको मिले हैं पहले भी मिले हैं एंड वी हैव कंफर्म दैट but now we are getting deeper, we are diving deeper into it, and this has got more sophisticated instruments than what we used to have in Chandrayaan 2. So correct. That is something which we should be all proud of. Also we are going to measure the seismic activities कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा earthquake जैसा आता है क्या. So we have those things, and the thing that you see right on the screen is going to give us a precise idea about the distance from the earth through the moon. Of course we know it, but this is going to measure it in a more precision. I would say the numbers would be more precise, and also we'll be using lasers and x-rays. Yes. Because the on the surface of the moon things are crazy. You don't expect an atmosphere or anything like that, all right? So whatever molecules are there of the gases, they are ionized, they are in plasmic state, so we want to also understand all that. So of course such a detailed study of the moon has never been done in the entire world, and we will be the first one to do that. So the whole world is looking at us right now, and we can also very proudly confirm that we already have a collaboration with Japan for the next mission. So you see the trust that we are gaining, and it's a space race now. Correct? This is your rover which has 14 days precisely to travel across the surface of the moon and gather all the data. Oof. The reason why it has got 14 days is because, again, once you see the moon and the light starts coming on the moon, it is 14 days of brightness and 14 days of darkness, right? So we say that the lunar cycle, isn't Yes. it? वो होता है ना चंदा मामा छोटे 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 हो जाते करेक्ट सो समथिंग लाइक दैट एंड हियर यू कैन सी कि कैसे ये स्लिंगशॉट मैकेनिज्म इज गोइंग टू वर्क कैसे ये स्लिंगशॉट मैकेनिज्म काम करने वाला है हाउ द ऑर्बिट इज गोइंग टू गो देयर एंड इट इज गोइंग टू बी कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून सो मून की ग्रेविटी से वो कैसे कैप्चर होने वाला है आई थिंक सर इस टाइम पे ये स्लिंगशॉट लेके पहले तो बाहर निकलेगा हाँ राइट दिस ग्रीन थिंग यू सी इज द मून अब ये मून के पास जाके डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा राइट नहीं दिस इज द ट्रैजेक्टरी इट विल टेक बट सर आई थिंक बच्चों को एक क्वेश्चन और आता है हम ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं घुस जाते डायरेक्टली जाते हैं एक्चुअली जब आप देखोगे कि बाकी जो भी कंट्रीज जो मून पे गई है वो बिल्कुल डायरेक्टली जाती हैं सीधा चली जाती है बट आप जितने टाइम अपने थर्स्टर्स को चलाते हो आप उतना पैसा और उतनी एनर्जी लगाते हो वहां पहुंचने में तो हम तो क्या सोचते हैं कि भाई काम होना चाहिए क्या है सर 40 दिन में पहुंचेंगे क्या है 4 दिन में पहुंच के क्या ही करना है हमें है ना सो जनरली वी इंडियंस थिंक यार ट्रेन में टिकट मिल रही है तो उसी में चलते हैं ना फ्लाइट में क्यों ही लेना है बिकॉज वो महंगा है सो द सेम थिंग गोज ओवर हियर बिकॉज आप देखो रशिया या फिर यूएस की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल सीधा जाते 4 दिन में मून पे पहुंच जाते ठीक है सो इट टेक्स 4 डेज बट इफेक्टिवली उनका जो बजट होता है वो हमसे 10x ज्यादा होता है तो हम सस्ते में जाते हैं आराम से चलेंगे कोई बात नहीं ट्रेन से चलेंगे 3 दिन में पहुंचेंगे पर उनसे बहुत बहुत कम बजट में हम पहुंच जाते हैं और इससे फायदा ये होता है कि हम मल्टीपल सेशंस मल्टीपल टाइम इसको प्लान कर सकते हैं हम मल्टीपल टाइम्स ये अटेम्प्ट ले सकते हैं हम मल्टीपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं ऐसे जिसमें हमें मान लो 10 बार जाना है तो भी हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि जितने में वो एक बार जाते हैं उतने में तो हम 10 बार चले जाएंगे सो दैट इज व्हाई द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टू अस और सर चंद्रयान और मार्स के बाद ऐसा भी हुआ कि इसरो को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वी हैव लॉन्च ऑलमोस्ट 250 सैटेलाइट्स अलग अलग कंट्रीज के जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है उनके सारे सैटेलाइट्स हम और इसके साथ फिर पैसा भी बहुत आता है बिकॉज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी है गरीबी है और टमाटर भी महंगा हो गया सब कुछ है राइट तो ये इतनी सारी चीजों के बाद हम पैसे स्पेस पे क्यों खर्च करें
राइट। तो विक्रम साराभाई ने ये बात बोला था कि इस वजह से ही हमें खर्च करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है। मोर ऑफ दीज फॉरेन फंड्स आर गोइंग टू कम टू अस इन टर्म्स ऑफ दे ट्रस्टिंग अस टू डिलीवर दैट पेलोड राइट देयर एंड देन इंस्टॉलिंग देयर सैटेलाइट्स। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट आफ्टर वी हैव डन दिस सक्सेसफुली। सो बेसिकली आपको फ्यूल बचाना है, आपको पैसा बचाना है, टाइम लग जाए कोई बात नहीं। सो दिस इज एवरीथिंग विच यू हैव सीन राइट नाउ, ये आपने देखा अभी। और इसके अलावा this entire journey of the Chandrayaan 3, that is what we are going to show you right now on your screen. You can see ये दो boosters लगे हैं, आपको मेन इंजन दिख रहा है, मेन रॉकेट दिख रहा है ना। अब ये अलग अलग स्टेजेस आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट होता है लिफ्ट ऑफ, जहां पे बूस्टर्स फायर होते हैं, लेकिन आप अभी भी देखोगे कि रॉकेट अभी भी नहीं फायर हुआ है, ठीक है। ये जर्नी चलती है ऑलमोस्ट 100 सेकेंड्स तक, S200, और ये सारे स्ट्रैप ऑन रॉकेट्स हट जाते हैं, ये बूस्टर्स हट जाते हैं, और फिर आई थिंक ये इन लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। आई मीन इफ यू हैव सीन द सेशंस बिफोर, आपको पता है सॉलिड फ्यूल हम पहले जलाते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं होता है। यू बर्न अ सॉलिड फ्यूल, दैट इज द गिविंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। तो आप जब एटमॉस्फेयर पार कर जाते हो, यू डिस्पोज देम ऑफ, और फिर आप आते हो मिडिल पे, जहां पर कंट्रोल्ड कंबशन कर सकते हैं थोड़ा। देखो सॉलिड फ्यूल का सिंपल एग्जांपल है, अपने दिवाली में जो रॉकेट जलाई है ना, ठीक है, तो वो सॉलिड ही तो होता है, उसके अंदर जो हम बारूद डालते हैं वो सॉलिड ही तो होता है। तो आपने जैसे आग लगा दिया, उसके बाद आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद वंस इट इज इग्नाइटेड, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो ये जो बूस्टर्स होते हैं सर, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। So this video is very properly explaining the path your lander, your rover is going to take. अर्थ के अराउंड घूमेगा कुछ दिन, थोड़ा स्लिंगशॉट लेगा, और फिर जाएगा और फिर ये जाएगा मून की तरफ, राइट। तो इसी में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट हमें बूस्टर्स ना बहुत कम फायर करने पड़ते हैं। यस। और इसके लिए फिर छोटे बूस्टर्स की जरूरत है। अब इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। जो ये जर्नी शुरू होती है अर्थ से मून की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑर्बिट। और फिर जब ये मून के पास जाता है तो उसकी ग्रेविटी उसको कैच करती है, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड लैंडिंग नहीं करता। ऐसा तो वो हार्ड लैंडिंग हो जाएगी अगर वो सीधे चले गए तो बेसिकली मून ऐसे है, तो ये मून की तरफ ऐसे नहीं जाएगा, ये साइड में जाएगा, ताकि फिर घूमना चालू करेगा। और इसीलिए होते हैं हमारे पास थ्रस्टर्स, जिसके डायरेक्शन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे हम अपने लैंडर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये गोल गोल घूमेगा, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट आने के बाद सर, जो प्रोपल्शन यूनिट था वो सेपरेट हो जाएगा, वो ऑर्बिटर की तरह एक ऑर्बिट में रहेगा। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट, अब मैंने बताया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कि कब ऑर्बिट इलिप्टिकल होने वाला है, कब ऑर्बिट आपका सर्कुलर होने वाला है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, करेक्ट। अब देख लो, अब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है, अगर ग्रेविटेशन आपने मेरे से पढ़ा है, तो आप सब प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये सर्कुलर कब होगी, उसकी ट्रैजेक्टरी हाइपरबोलिक कब होती है ना। तो ये एस्केप वेलोसिटी, ये अगर आपने पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन आप अभी देख रहे हो रियल लाइफ। आप समझ सकते हो कि आधा पार्ट मान के चलोगे ऑर्बिट करता रहेगा, और दूसरा बाकी बचा हुआ जो कि हमारा लैंडर है, वो सर्कल ले लेके वापस मून के सरफेस पे जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टुवर्ड्स मून, और इट इज सपोज टू गो टुवर्ड्स मून। यस। तो उसके बाद फिर लैंडर सेपरेट होकर के ये स्कैन कर रहा है अभी। हाँ, और ये ना मोर ऑफ जीपीएस की तरह काम करेगा, जो हमारा लैंडर है उसको सिग्नल भेजेगा कि दिस प्लेस इज प्रॉपर फॉर लैंडिंग। और ये लास्ट स्टेज है जहां पे हम लैंड करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि आप बहुत प्यार से, बिल्कुल आराम से आप नीचे आते हैं। और उसके बाद सिग्नल जो है वो रिले होने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका रैंप खुलेगा, उस रैंप से निकलेगा हमारा प्रज्ञान रोवर, राइट। और ये लाइन ऑफ साइट में ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा एरिया हम नहीं कवर करने वाले हैं। बट जो भी रिसर्च हम करने वाले हैं यहाँ के मिट्टी को लेकर के, यहाँ पे टेम्परेचर कैसे, मून पे किस तरह से टेम्परेचर मॉड्यूलेशन होता है, क्या करंट प्रॉपरली फ्लो होता है, क्या ये कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करने वाले हैं। और ये पूरा काम चलेगा अगले 14 दिन तक। फिर फिर से वापस, जब अंधेरा है तब तो बैटरीज चार्ज नहीं हो सकती, सोलर पैनल चलेंगे नहीं, फिर अगले बार वापस 14 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल आता है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा जो लैंडर है वो काम करने वाला है। बात आती है कि ये रॉकेट्स में होते क्या हैं, ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते क्या हैं, ये फ्यूल क्या होते हैं। तो इसके लिए हम सर किसको बुलाने वाले? हम बुलाएंगे केमिस्ट्री एक्सपर्ट को। आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बट यू नो व्हाट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्सपर्ट हु कैन एक्सप्लेन यू थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली, राइट। सो फॉर दैट विल बी कॉलिंग राखी मैम। एंड बाय द वे पीपल, 9 to 10, 6 to 8, तुमको नहीं पता है, राखी मैम इज टीचिंग केमिस्ट्री ऑन द जेई चैनल। डू विजिट द चैनल समटाइम्स, you'll feel amazing. And yes, over to you, Rakhi ma'am.
Hello, everybody. So I hope that all of you are actually very excited. And thank you very much, Mrinal sir and Saurabh sir. And as they actually mentioned about each and everything, and I just really want to talk about ki yes, it's a very proud moment for all of us to witness the launch of this historic, I'll just say, Chandrayaan 3 basically. And I'll just also say ki bhai Chandrayaan 3 jo hai is India's third lunar exploration mission basically. Isn't it, yeah, people? So I hope that you all are excited in order to know कि भाई क्या chemistry है इसके पीछे. You actually want to know the science behind that particular rockets. And I too have this particular LVM जिसको previously हम GSLV Mark 3 कहते थे. So with the help of this particular model, I'll be actually explaining you the parts, the भाई कहाँ solid propellants का use है, कहाँ liquid propellants का use हुआ है, and wherein we are actually talking about the cryogenic engine also. So I hope this is a better way we'll be actually talking about the same. I hope that you all are actually agreeing to it. Yes, absolutely right. So I'm really feeling proud that these types of the model I do have in my studio. And see, today there was the launch of Chandrayaan 3 and you all actually witnessed this particular moment. And that's really very, very great. So in a way, I'll just say one particular thing ki, this particular Chandrayaan 3, if I just talk about, it's powered by India's own technology basically, developed by ISRO, the India's space agency basically. Isn't it, people? Yes, absolutely right. So I hope this particular thing is absolutely being clear to you guys. Everything is being clear, but हाँ जो इसके पीछे की chemistry है वो मुझे यहाँ पर समझाना है आपको. So you need to actually listen to me what I really want to say because it's gonna be very, very exciting basically. Yes. So LVM-3, we are actually talking about Chandrayaan 3 mission. It will be the 4th outing for India's most powerful rocket. So let's actually move ahead and let's talk about कि भाई ये जो पूरा हमारा mission है, the whole mission, it has 3 components basically. The very first one, if I just talk about the propulsion module, if I just talk about which we'll be actually discussing in the upcoming slides. The second one is the Vikram lander basically, and the third one is the Pragyan rover, okay, which will be located, okay, which will be actually located in the payload at this particular tip. ठीक है, so जो हमारा विक्रम लैंडर है and प्रज्ञान रोवर है वो इस particular payload में है. And if I just talk about the propulsion module, if I just talk about the solid propellants, वो यहाँ पर हैं इधर. And if I just talk about the liquid propellants, they are contained over here. And talking about the cryogenic engine, if I just talk about, it's over here. So each and every part will be actually talked about, and I'll be talking about each and every part in detail. So LVM-3, जैसे कि we were discussing, it has actually 3 stages of combustion. It do have 3 stages of combustion basically. 2 S-200 solid rocket booster. So this one, and this one. These 2 side ones, if I just talk about, these are 2 S-200 solid rocket booster. The second one is L110. If I talk about L110, you can just have a look over here. I'm just explaining you. L110 liquid stage rocket, Vikas rocket also we say to it as. And the third one is this cryogenic stage basically. So these are the 3 stages we'll be actually discussing. And while there was a launch going on, आप लोगों ने देखा होगा live कि भाई किस तरह से rocket propel हुआ, how it actually happened. So each and everything will be explained by me. So need not to worry over here. So आप actually में सोच रहे होंगे कि why solid and liquid fuel दोनों ही क्यों use किए? Why not only one basically? ठीक है. And you might be also thinking, what is the major difference? तो भाई difference के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, so I'll be talking about the physical state. So at room temperature, solid is solid and liquid is liquid. That's the main difference. Then if I just talk about the second thing, if I just talk about cost effectiveness. So solid fuel जो होता है, it basically reduces the overall cost of the mission. ठीक है. So mission point of view से cost consideration भी देखा जाता है. And if I talk about the operational technicality, so अगर मैं liquid propellant के बारे में बात करना चाहूँ, so it's basically easy to regulate the speed of combustion when we come to the liquid propellant.
समझ में आया? yes और no तो आप बोल ही सकते हैं, isn't it? yes people, हाँ जी. so अगर मैं सॉलिड रॉकेट के बारे में यहाँ बात करती हूँ, सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स के बारे में बात करती हूँ, जैसे इन दोनों के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, S200 सॉलिड रॉकेट फ्यूल्स के बारे में जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूल मेनली और यूजुअली आपको एल्यूमिनियम पाउडर देखने को मिलेगा, and along with it the oxidizers such as ammonium perchlorate. लेकिन for this particular LVM3 what we have actually used, which solid propellant which we have used is HTPB. It's a hydroxyl terminated polybutadiene. Let me move ahead and talk about the same. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें दिख ही रही होंगी जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है. सो दीज टू आर द सॉलिड रॉकेट बूस्टर, एंड यहाँ पर जो प्रोपेलेंट हमने यूज किया है जिसमें ऑक्सीडाइजर का भी मिक्सचर है, इट्स बेसिकली हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन. आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. यस पीपल, सो आप यहाँ पर एक तरह से दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू कंसिडर, ये बात समझानी थी मुझे आप लोगों को. सो अब यहाँ होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर. सो आप लोगों ने फ्यूल कंबशन के बारे में कुछ थोड़ी नॉलेज तो आपको होगी, नहीं भी है तो सुन लो कि यहाँ पर इट्स अ हाइड्रोकार्बन. ये जो सॉलिड हमारा है, सॉलिड रॉकेट फ्यूल जो है हमारा, इट्स अ हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है, so when it combusts, so I'll just say high amount of energy is released. In a way, exhaust gases जो होती हैं, they are evolved at a higher temperature and a pressure. This particular thing is being clear to you. Higher temperature and pressure पे exhaust gases जो होती हैं, they actually exit. Yes. So जब ये gases exit करती हैं यहाँ से, कहाँ से? When these gases exist from these solid rocket बेसिकली, सो कंबशन चैम्बर से जब ये गैसेस एग्जिस्ट करती हैं तो रॉकेट की बॉडी को अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है. रॉकेट की बॉडी को अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है. आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट के अंदर, तो सबसे पहले इनका इग्निशन होता है, सॉलिड रॉकेट फ्यूल्स का इग्निशन होता है. जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो कंबशन चैम्बर से बाहर आती हैं, रॉकेट की बॉडी को अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है. ठीक है, जैसे कि आप बलून को विजुअलाइज करो, जब आप बलून को इन्फ्लेट करते हैं, यस, एंड देन जब आप उसको रिलीज करते हैं, सो जो गैसेस होती हैं दे एग्जिट फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन और बलून आगे की तरफ प्रोपेल कर जाता है. द सेम मैकेनिज्म इज एक्चुअली अप्लाइड ओवर हेयर ओनली. होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. बिल्कुल सही बात रोहित, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी तो आप सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक बलून के बारे में बात की है, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी तो सोचिए किस लेवल का थ्रस्ट मिलेगा लॉन्च व्हीकल को. और वही हुआ जो आपने अभी लाइव टेलीकास्ट में देखा, isn't it? Yes ma'am, we actually seen. अब जो सेकेंड स्टेज आता है, when I just talk about the second stage of burning, so second stage of burning है हमारा ये लिक्विड प्रोपेलेंट वाला सेकेंड स्टेज ऑफ बर्निंग, जिसको हमने बोला है L110 लिक्विड स्टेज. यस, लिक्विड प्रोपेलेंट का. अब इस लिक्विड प्रोपेलेंट में क्या होता है, वी डू हैव ऑक्सीडाइजर टैंक, अलोंग विद इट वी डू हैव लिक्विड फ्यूल टैंक. ठीक है, ऑक्सीडाइजर टैंक भी है एंड लिक्विड फ्यूल टैंक भी है. यहां पर समझ रहे हैं आप? आई थिंक यू आर एक्चुअली गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यस, सो दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द कंबशन चैम्बर. ठीक है, सो ऑक्सीडाइजर टैंक एंड द लिक्विड फ्यूल टैंक ये दोनों कनेक्टेड हैं टू द कंबशन चैम्बर और हम इनको एक्चुअल में रेगुलेट कर सकते हैं. यस, वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ कंबशन ओवर हेयर. इसीलिए वी एक्चुअली बेसिकली गो फॉर दिस लिक्विड प्रोपेलेंट, क्योंकि देखो यार, अगर आप सॉलिड प्रोपेलेंट को एक बार आपने इग्नाइट कर दिया तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वो तब तक जलेगा जब तक कि पूरे हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट नहीं हो जाते. लेकिन लिक्विड प्रोपेलेंट्स के जब हम बारे में बात करते हैं, सिंस वी डू हैव ऑक्सीडाइजर टैंक एंड अ लिक्विड फ्यूल टैंक, सो वी कैन रेगुलेट द स्पीड ऑफ द कंबशन. ये थोड़ी प्रायोरिटी हमें मिल जाती है. ठीक है, अब इस कौन से प्रोपेलेंट हमने यूज किए हैं, जस्ट लेट मी टॉक अबाउट. जो लिक्विड फ्यूल हमने यहाँ पर लिया है, इट्स बेसिकली MMH एंड DMH, मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड ऑफ, आई जस्ट से मोनो मिथाइल hydrazine, you can say hydrazine alkyl derivative. Along with it we have been using the oxidizer as dinitrogen tetraoxide. ये हमने यहाँ पर यूज किया है. ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा एज वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट फॉर द सॉलिड प्रोपेलेंट. आप मुझे बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगेगा.
सो न्यूटन्स का कौन सा लॉ यहाँ पर लग रहा है? Just let me know in the comment section. I just really want to talk about कि न्यूटन्स का कौन सा लॉ यहाँ लग रहा है. मुझे ये बात आप लोगों से पूछनी है. When I just talk about कि same principle लगेगा as we talked about for the solid cases. ये जो solid chambers के बारे में जो मैंने बात किया था कि किस तरह से ignition होगा, how they are going to move upward. The same principle has been applied over here in the liquid propellant case. प्रतीक एब्सोल्युटली राइट, रोहित एब्सोल्युटली राइट, मोमेंटम कंजर्वेशन थर्ड लॉ, बिल्कुल सही बात है. दैट मींस आपको मेरी वो वाली बात समझ में आ चुकी है. मोमेंटम कंजर्वेशन एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है. द सेम थिंग आई वाज एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट. बिल्कुल सही बात है एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये पर्टिकुलर चीज आपको पता है. सो द सेम थिंग वी हैव रिटन ओवर हियर. ठीक है. सो आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे सॉलिड प्रोपेलेंट्स जो बात मैं कर रही थी, करीबन 127 सेकेंड्स तक ये कंबस्ट होंगे. आफ्टर 127 सेकेंड्स ये सेपरेट आउट हो जाएंगे. देन कम्स द second stage which is liquid propellants. So from 108 seconds to 305 seconds ये actual में combust होंगे and after that ये भी separate out हो जाएंगे. Then we are just left with this cryogenic stage, the third stage, cryogenic stage, wherein we are talking about cryogenic engine के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. So this is what I have actually explained you each and everything over here. मैंने आपको solid propellants के बारे में बताया, first stage, second stage about the liquid propellants बताया, and when I just come, I'll just talk about the third stage, the cryogenic stage basically. And cryogenic stage में what actually happens basically, यहाँ पर cryogenic stage के अंदर which is indigenously built, low temperature वाले जो fuels होते हैं, जैसे कि liquid hydrogen के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, why liquid hydrogen? Because of lower weight. ठीक है. So liquid hydrogen and liquid oxygen will behave. Liquid oxygen is going to behave as an oxidizer. Liquid hydrogen हमारा fuel है. इनका जो मैंने बोला ना, these are low temperature fuels, temperature of about minus 250 degrees Celsius basically, and they are highly effective. ठीक है. Yes or no? बिल्कुल राजा, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा. उज्जवल ने जो कहा बिल्कुल सही कहा. So I think I have actually made my point very much clear over here about all the three stages कि किस तरह से if in the very first stage solid rocket boosters are going to work, in the second stage how the liquid stage, how the liquid propellants are going to work, and in the third stage, the cryogenic stage, how the cryogenic engines are going to work. Hope this particular thing have made you each and everything clear into your mind कि भाई इस तरह से जो rocket है ये work करते हैं. This is a very small talk regarding the science behind the rockets. Hope this has absolutely been clear to you guys, isn't it? Yes people. So ये reaction जो है ये मैं आपको already दिखा चुकी हूँ. I'm not दिखाया है, मैंने आपको बताया है कि when if I just talk about that particular second stage, तो वहाँ पर you can see high amount of energy has been released wherein carbon dioxide, nitrogen and water vapors are released. So this is the science behind each and everything. Hope you got my point. The science behind कि भाई किस तरह से rockets यहाँ पर work कर रहे हैं. And now I'll just say it's over to you, Saurabh sir and Mrinal sir, which will be taking this particular session further ahead. Just let me know the team if Saurabh sir and Mrinal sir are actually there in the studio. Whoa, thank you, Ragi ma'am. That was such a important and beautiful information. Yes, no? yes, and so insightful. So yes, talking about some information, हम भी तो जानना चाहते हैं कि हमारे जो students हैं उनकी भी नॉलेज टेस्ट करने की थोड़ी सी चाहत हो रही है, बहुत मन कर रहा है कि थोड़ा समझें. तो सर, व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट? सो एवरीबॉडी, इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू नो कि एक क्वेश्चन है आपको दिया जाएगा. मून पे व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज टीम वेंट, दे लेफ्ट मिरर्स ऑन द मून. अब मिरर क्यों छोड़ेगा? शीशा थोड़ी देखना है हमको. क्यों छोड़े हैं मिरर हमने? भाई हेलमेट पहने हुए थे तो है ना. सो थिंक अबाउट इट. एक चीज तो है कि मून ना लगभग 3.6 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जा रहा है, ये बोला जाता है, और हमने छोड़े हैं मून. सो दिस इज अ हिंट विच आई जस्ट गिव यू. हम कैसे ढूंढते हैं कि कितना दूर मून है और कितना दूर जा रहा है, एंड हाउ आर दीज मिरर्स हेल्पिंग अस. दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एम मिस्ट्री, द मिरर मिस्ट्री. सेकेंड इज, आई थिंक सर ये बच्चों ने देखा होगा कि जब भी आप इसरो के अगर आप देखें लैंडर देखो या फिर ना रोवर देखो, कहीं ना कहीं सब पे गोल्ड प्लेटिंग रहती है. हाँ. अब ये तो है नहीं कि गोल्ड इतना अच्छा है तो क्यों लगाते हैं गोल्ड. दैट इज अनदर क्वेश्चन वी कैन आस्क.
That's so true. तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमारे चैट बॉक्स में देने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि चलो आपको भी इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आई होप आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपको बहुत मज़ा आया होगा. और जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि न्यूज़ आ चुकी है कि all the stages that were planned for today has been successful. So yes, congratulations to all our scientists. Yes, congrats. And, feel proud. Yes. And you know what? You can see different project directors जो अभी बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे contribution दिया और उनका क्या काम था exactly, उन्होंने किस चीज़ पे काम किया है. And it's a team effort. Thousands of scientists have come together to work on this project. Yes, and years you spend, and then you see this one success. That's so true. So yes, I think it's time to take a leave from our kids. हम मिलते रहेंगे फिर से कंटेंट के सेशन में, ऑफ कोर्स पढ़ाई करते रहेंगे, है ना. I would say आज का दिन बढ़िया निकला है अब तक तो, है ना. अच्छा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है. Go ahead, celebrate, थोड़ा बाहर जाओ, है ना. Treat yourself because you know what, you have seen something amazing. Your country has done something really amazing. तो आज you can give yourself a break. Enjoy करो यार. So that's it from our side today. Thank you so much for joining in. This is your host, dost and mentor Mrinal. And this is Saurabh signing off. See you next time, next day, next session. Till then, take care. Bye-bye. Bye.